Okay, then let's start. In yesterday's lecture, I have starting the last point in your unit first, that is nucleic acid. So, nucleic acid, it is two types of nucleic acids which are present in the cell, that is DNA and RNA. So, DNA, which is nothing but the deoxyribonucleic acid, and RNA is the ribonucleic acid. So, in previous lecture, I have already discussed about the types, structures, and functions of the DNA. So, there are three types of DNA: A DNA, B DNA, and Z DNA. These are the different characters about this DNA and functions. So, let's start with the structures of RNA. So, this RNA, they are present in nucleus also, nucleus as well as in the cytoplasm. But it is very short and single stranded. डीएनए में हमने देखा था इट इज लॉन्ग स्ट्रक्चर्स है एंड दे विल बी डबल स्ट्रैंडेड. Here RNA molecule is the single stranded. So in case of the RNA, the single strand, it is made up of the pentose sugar and phosphate link together. तो यहाँ पे आप sugar molecule, there is the phosphate molecules and bases. So which are the nitrogen bases are present in the RNA? So same like the DNA, in RNA also there is the purine as well as in pyrimidine nitrogen bases. So purine bases are the adenine and guanine, and pyrimidine bases are cytosine and uracil. So here, what is the difference? Which base is different from DNA? So in case of the RNA, there is the uracil, and in DNA there is the thiamine. वहाँ पे हमने देखा था साइटोसिन और थायमिन पैरामिडिन बेसिस है. यहाँ पे साइटोसिन एंड यूरासिल नाइट्रोजनस बेसिस है. तो वो आपको वहाँ पे देखना होगा, याद रखना होगा कि कौन कौन से डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस रहते. देन how the nucleotide of RNA molecule is made. So in case of the nucleotide, one sugar molecule, one phosphate molecule, and one nitrogen base together, they form the nucleotide. Same like the DNA molecule, one nucleotide is made up by the one sugar molecule, one phosphate molecule, and one nitrogen base. So here you can see the single-stranded RNA structure in that one nucleotide, it is made up by the phosphate, ribose sugar, and the basis, that is cytosine. Here there is the uracil or base of the uracil is present instead of the thymine. Then let's move toward the types of RNA. So RNA, it is two types, that is genetic RNA and non-genetic RNA. So genetic RNA, that means they replicate and transfer the information. For example, viral DNA in plants and animals, various types of viruses are present. So these all information, all the viruses, they can easily replicate it and they can transfer the genetic information. So that comes under the genetic RNA. For example, यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाया है, किसका पिक्चर है, कौन सा वायरस है ये? तो ये कोरोना वायरस का है जो हम अभी इंस्टेंटली जो फेस कर रहे हैं. So this coronavirus is also a animal virus and it is a genetic RNA. They always change their, they fastly replicated and also they can be change their structures and they can transfer from the different generations. Then
Second type of RNA is the non-genetic RNA. So non-genetic RNA, that means they cannot replicate it, but they can perform in the cellular functions like protein synthesis. ओके, नॉन जेनेटिक आरएनए मतलब जो इजीली रिप्लिकेट नहीं होते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं. So, according to the protein synthesis, these non-genetic RNA are differentiated into three types. That is, mRNA means messenger RNA, rRNA that is ribosomal RNA, and tRNA is the transfer RNA. So, all these three types of RNAs are synthesized uh, in DNA and in the न्यूक्लियस. तो जो भी ये तीनों टाइप से आरएनए के वो न्यूक्लियस के अंदर ही तैयार होते हैं, डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं. तो वो जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में ही होती है. यू कैन सी द साइड फिगर्स, दैट इज द स्ट्रक्चर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ribosomal RNA, transfer RNA. So let's discuss one by one types of the RNA. So first of all, the messenger RNA. So messenger RNA, it is mRNA, and the structures of the mRNA is the linear, hairy, long RNA present in nucleus and cytoplasm. मैसेंजर आरएनए स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, एंड दीज आर प्रेजेंट मोस्टली इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म दोनों में ही हमें मैसेंजर आरएनए दिखाई देते. सो द सिंथेसिस ऑफ द this mRNA mostly produced or synthesized in the nucleus by the process catalyzed by RNA polymerase second enzyme. तो वहाँ पे न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है. वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एंजाइम है वो क्या करता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए तैयार करता है. सो दिस मैसेंजर आरएनए इट इज एट द स्ट्रक्चर, यदि आप देखोगे उसका, तो एट द 5 प्राइम एंड देयर इज द लीडर सीक्वेंस. मोस्टली दिस so at the 3 prime end there is the trailer sequence. 5 जो 5.5 डैश आपको दिखेगा, दैट इज 5 प्राइम उसे बोलते हैं. तो 5 प्राइम में वहां पे आपको लीडर सीक्वेंस नजर आएगा, और जो टेल है मैसेंजर आरएनए का जो टेल है वहां पे आपको ट्रेलर सीक्वेंस नजर आएंगे. So in this process, the capping enzyme acts as guanine nucleotide to the 5 prime end. तो जो लीडर सीक्वेंस है, लीडर सीक्वेंस के आगे एक कैप रहती है. सो कैप इट इज ऑलवेज इन द guanine nucleotide. जो guanine नाइट्रोजन बेसिस है वो ऑलवेज forms a cap to the messenger RNA. And this cap is essential for the ribosome to bind the 5 prime end of the messenger RNA. तो मैसेंजर आरएनए को फिर क्या होता है? राइबोसोमल और राइबोसोम्स मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं. तो राइबोसोम मॉलिक्यूल्स बाइंड करने के लिए वो एज ए स्टिकिंग सब्सटेंस कुछ चाहिए, तो वहाँ पे जो guanine कैप रहती है वो guanine कैप उस जो राइबोसोम मॉलिक्यूल्स को अटैच करने का काम करते हैं. Then at the 3 prime sequence or the 3 prime end, there is a sequence of adenine nucleotide, that is 50 to 250 adenine will be attached at the trailer region. जो टेल है वहाँ पे 50 to 250 numbers of the वहाँ पे adenine nucleotides add होते.
जो हमने अभी देखा एडेनाइन जो नाइट्रोजन बेसिस है वो 3 प्राइम के यहाँ पे ऐड हो जाते एंड दे फॉर्म द पॉली ए टेक, जो आपको एंड में वहां पे दिखाई देगा पॉली ए टेक. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर मेन फंक्शन ऑफ द mRNA इज द मैसेंजर. जो भी मैसेज है डीएनए का, जो भी मैसेज है वो कैरी करने का काम है मैसेंजर आरएनए का. Next function is about the synthesis. So this synthesize the nucleus on one of the strands of DNA by the process of transcription. So जो DNA molecules है, DNA molecule से RNA molecule मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्स होता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन. सो इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. Then second type of the RNA is the ribosomal RNA. So these ribosomal RNAs are present, mostly they is present in the ribosome. That's why I gave the name ribosomal RNA. So these ribosomal RNA are the longest RNA and they contain about 80% of the total RNA. जो भी ऑर्गेनेलिज्म में जो भी आरएनए प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 80% तो राइबोसोमल आरएनए ही रहते हैं. बाकी 20% मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए रहते हैं. So they can synthesize in nucleus by DNA and the process catalyzed by RNA polymerase second. Same जैसे डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है उसी तरह डीएनए मॉलिक्यूल से राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म्स होता है न्यूक्लियस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड. Then after the formation of the ribosomal RNA, they can transfer in the cytoplasm. जैसे उनका फॉर्मेशन होता है, they will be transferred in the cytoplasm. Nucleus के through nuclear pore, they will be transferred to the cytoplasm. So this ribosome is a nucleoprotein material. They contain the rRNA molecules and ribosomal protein. So each ribosome has two subunits, larger and smaller, associated with the each other. So in last year you have studied the ribosome structure. So in ribosome, in prokaryotic as well as eukaryotic, these ribosome molecules which is made up by the two subunits, that is larger subunits and smaller subunits. So larger in prokaryotic, the ribosome is 17 S and the larger subunit is of 15 S and smaller subunit is of 30 S. So these ribosome molecules or ribosome subunits, they will be formed by the rRNA and some proteins. So here there is the 5S rRNA plus 20S rRNA and different 34 proteins are present in the larger subunit, that is 15S of the prokaryotic ribosome. In smaller subunit, it is which is in 13S and they will be made by the 16S rRNA and 21 different proteins. Similarly, in case of the eukaryotics, it is in 18S, larger subunit is of 16S and smaller subunit is of 40S. 16S, which is made up by the different types of rRNA, that is 5.8S, 5S and 28S ribosomal RNA plus 49 different proteins. In smaller subunit of the eukaryotic cells contains the 18S ribosomal RNA and
33 different proteins. So this is the structures of this ribosomal RNA. What is the function of ribosomal RNA? So main function is they will be provided the binding site to for the messenger RNA on the ribosome. राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए को बाइंड करने का काम वहां पे करता है. एंड दे कैन ओरिएंटेड दिस मैसेंजर आरएनए एंड दे रिलीज आउट द ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए के ऊपर फिर ट्रांसफर टीआरएनए वहां पे अटैच हो जाता है, तो उसको रिलीज करने का काम है राइबोसोमल आरएनए करते हैं. So this is all about the ribosomal RNA. Third type is about the transfer RNA. So this is the structure of transfer RNA. This is also the single stranded, but its structure is the folded structure. In variable shapes, they will be folded. Here, in case of the transfer RNA, there is a short arm and long arm is present. At the short arm, it is 5' end and long arm is 3' end. So, at the long prime, there is the 3 nucleotide bases, that is CCA is always present, and at the 5' end there is the G, that is the guanine nitrogen basis is present. So during the protein synthesis, the activated amino acids they will be get attached to this CCA, जो हमारा 3' एंड है वहां पे जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स दे विल बी अटैच्ड टू दिस 3' end. And the anticodon they are situated on the opposite to the amino acid arm. जो आपको नीचे ग्रीन कलर में जो नीचे वाला बेस पोर्शन है दैट इज द एंटीकोडॉन आर्म. तो जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक टीआरएनए अटैच होता है जब भी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडॉन्स रहते हैं. एंटीकोडॉन्स दैट मीन्स अपोजिट कोडॉन्स. जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर है उसके अपोजिट जो उसको बाइंड हो सकते हैं वैसे कोणों से ट्रांसफर आरएनए के ऊपर रहते. तो जैसे वो मैसेंजर आरएनए चेन आगे ग्रो होती जाएगी उसी तरह उसी टाइप में वहां पे एंटीकोडॉन्स ऐड होते जाते. सो मेन फंक्शंस ऑफ दिस tRNA is the carrying amino acids from cytoplasm to the ribosomes during protein synthesis. जो भी अमाइनो एसिड्स 3' के ऊपर अटैच होते उनको कैरी करने का काम भी tRNA करते. This process is the translation process. In here you can only let's know idea about the transcription and translation process. ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है. उसी तरह ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है? जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए की मदद से वहां पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं. उसके हिसाब से वहां पे डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं. दैट इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो हियर दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ RNA, its different types, that is messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. So last one is about the difference. So what are the main difference between DNA and RNA? Both are the nucleic acid, but structurally and functionally they will be variables. So according to the structure,
In DNA, it is double-stranded polynucleotide. RNA molecule, it is single-stranded polynucleotide. If we consider the pentose sugar in DNA, which type of sugar is present? That is deoxyribose. And in RNA, it is in ribose sugar. Only ribose sugar is present. Nitrogenous bases in DNA and RNA are in DNA. There is a thymine present and uracil absent. And in RNA molecule, there is thymine absent and uracil is present. So adenine, guanine, thymine, and cytosine are present in the DNA, and adenine, guanine, cytosine, and uracil is present in the RNA. Regarding the shapes of the molecules, in DNA it is only one shape, that is double helix structure, and in RNA molecules there is a three types as mRNA, messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. In case of the replication, so here in case of DNA, its nucleus or the DNA cells, they will be self-replicated. They having their own capacity to its own replication. But in case of RNA, they are not incapable for its replication. Then next is about the function. So in case of the DNA, the main functions of the DNA, they will reserve all genetic information of the organism. And in case of the RNA, they do the function in case of the synthesis of proteins. Then last one is about the lifetime. So long last throughout life of the cells, the DNA molecules will be present. But the RNA molecules, they are short life and they will be constantly replaced. Then protein synthesis molecules will be released when the RNA molecules will be die. So as per the requirement of the protein molecules, the RNA will be produced. But DNA is lifelong, they will be long lasting, they will be search all genetic information of the cells. So here all about the DNA as well as RNA structure, functions and its type. So in exam, different types of MCQs will be asking on this type. So here I can stop my sharing.